ओके लवली। सो अभी हम शायद यूट्यूब पे लाइव वापस से किया है मैंने। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग। ओके ओके फैंटास्टिक। सो वी आर लाइव ऑन यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब का मैं एक लिंक शेयर करता हूँ यहाँ पर जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे जूम के साथ में बहुत ही क्विकली। आई एम जस्ट शेयरिंग अक्रॉस द लिंक ऑन यूट्यूब राइट नाउ। Okay, I'm going to pin it across. People who are watching this on YouTube, you can join me on the Zoom platform. आप जुड़ जाइए फटाफट से Zoom के platform पे so that it is easy. And poll is ongoing if you are able to see. So director साहब note करिए there is some issue with Zoom क्योंकि YouTube live नहीं हो रहा था. Poll आधे लोगों को दिख रहा है आधे लोगों को नहीं दिख रहा है. So I don't know. Something is problematic on the Zoom and चलिए जाने दीजिए. अभी फिलहाल मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जो मार्केट सूत्र शुरू किया मैंने 1 मिनट वीडियो डालना 1 मिनट से कम का शॉर्ट्स डालना विच इज अबाउट साइकोलॉजी सम अबाउट मार्केट नगेट्स समथिंग लाइक दैट इज इट हेल्पफुल फॉर यू apart from the short videos which I am putting daily now apart from the short videos I am putting it on YouTube I am putting it on Twitter I am putting it on my Instagram handle also। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करते हैं क्या? इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया जा सकता है अभी सभी लोगों के साथ में। देखें फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये शॉर्ट शॉर्ट 1 मिनट के जो शॉर्ट्स है वो इंस्टाग्राम पे मैं डाल रहा हूँ और ट्विटर पे भी डाल रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करिए ना डायरेक्टर साहब सभी के साथ में सो दैट दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। कैन यू प्लीज डू दैट? ओके लवली, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट अक्रॉस। अभी मार्केट में हो क्या रहा है? Nifty or options behavior is very different. What is happening with option is very different than what is happening with Nifty spot chart. मैं आपको वो बिहेवियर बता रहा हूं वापस से। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू ऑब्जर्व एंड मे बी इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स टू टेक पोजिशंस if you can explore this kind of movement. So I'm going to open up a call option. So I'm going to go across on my Go charting. I'm going to share across my screen right now. And I'm just going to do that. यहाँ पर ओके यहाँ पर are you able to see this? Everyone is able to see this chart? ओके एवरीवन इज एबल टू सी लवली। यहां पर पहले तो ये जो लेफ्ट ये जो आप देख रहे हो ना इसे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। ओके ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल का मतलब हुआ 26,000 कॉल पे बिल्डअप है। इसके ऊपर जाना मुश्किल है। 25,500 पे कॉल और पुट दोनों बिल्डअप हो रहा है। मतलब ये शॉर्ट स्ट्रेडल है यहाँ पर विच इज व्हाट वी आर सीइंग। मार्केट गैप्स के फॉर्म में मूव हो रहा है। ओके वी कैन सी क्लियरली दीज आर गैप। दिस इज अ गैप एरिया, दिस इज अ गैप एरिया, दिस इज अ गैप एरिया। सो निफ्टी इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ गैप्स। ऊपर हो या नीचे हो ये गैप है। अब इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सपोर्ट जोन का है जहां पर आज वो क्लोज हुआ। व्हाई? बिकॉज दिस वाज द लेवल, दिस वाज द लेवल। आप देख पा रहे हैं एवरी वन ऑफ यू? दिस वाज द लेवल। These are price action support area. This was resistance, now it will be support. So shall we buy here? No. Nifty is moving in a very very broad range. Okay, very broad range with the level of 25,728 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे गैप डाउन हो गए which was the time support area. Okay, that was the time support area. नीचे का जो सपोर्ट है निफ्टी का आज का जो क्लोज हुआ है एग्जैक्टली वो सपोर्ट पे ही क्लोज हुआ है। सो there is no setup here for taking a naked directional bet। यहां पर आपको बहुत क्लियरली नॉन डायरेक्शनल सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए। व्हाट इज अ नॉन डायरेक्शनल सेटअप व्हेन यू लुकिंग एट ऑप्शंस? ऑप्शंस में अगर आप देख रहे हैं तो नॉन डायरेक्शनल सेटअप क्या होता है आप बताएंगे एवरीवन? स्ट्रैंगल, एब्सोल्युटली शॉर्ट स्ट्रैंगल या स्कैल्प करना होगा।
पुट रेशियो सेल नहीं कर रहे हैं, रिस्की हो सकता है। सो मे बी स्ट्रैंगल बनाओ, दूर का ओटीएम ऑप्शन। अब मैं आपको ऑप्शंस की एक एनोमली बताता हूं, उसको कैसे कैपिटलाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊं। सो फिलहाल हमारा ये जो चार्ट है ये निफ्टी का है, ये रेंज में है, ओवरऑल कुछ हुआ नहीं है। अभी यहां पर मैं चलता हूं लेके से 25,000 का पुट ऑप्शन, और 5 मिनट चार्ट पे हम चलते हैं। यहां पर नीचे मैं एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी डालता हूं। दिस इज 5 मिनट्स, ये पुट ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं यहां से आप लोगों के सामने कॉल ऑप्शन, 26,000 कॉल ऑप्शन। ना ये चार्ट को देखिए, कैन आई से दैट निफ्टी पूरे दिन डाउन ट्रेंड में था? आर यू विथ मी, एवरी वन ऑफ यू? कैन आई से दैट निफ्टी फॉर द एंटायर डे टुडे वाज इन अ डाउन ट्रेंड? सो फ्रॉम दिस लेवल निफ्टी वाज इन अ डाउन ट्रेंड, एंड दिस इज द कॉल ऑप्शन प्राइस। कुछ सेंस बन रहा है क्या? कॉल ऑप्शन वॉज ट्रेडिंग एट द लेवल ऑफ 11 रुपीज, 12 रुपीज, 12.5। ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, हाँ? और निफ्टी कहां था? निफ्टी का चार्ट में डाल देता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, न्यू पैनल में निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। दिस इज निफ्टी चार्ट। अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो कॉल ऑप्शन का क्या होना चाहिए? कैन यू टेल मी? इफ निफ्टी इज गोइंग डाउन, व्हाट शुड हैपन टू कॉल ऑप्शन? शुड कम डाउन, राइट? Isn't that a common sense? What is happening with call option? Can you see that? All the day, entire day, the call option is just spiking on the upside. कॉल बढ़ रहा है, निफ्टी गिर रहा है, मतलब ये क्या है भाई? लेकिन which means IV. Let us look at that. Which means the IV has been constantly rising, which was around the level of 10, closed at 4, 14. So IV is an implied volatility of an option, which is a very, very important information for us. Now, if I have to be, uh, if I'm an option trader, are you an option trader, guys? Do you trade in options? Put down on the chat if you are trading in options. At least put down on the chat. People on YouTube, do ensure to join, subscribe the channel. If you're trading in options, can I say that this becomes a very important information for you? If you're buying an option when the IV is at the high, and I know the IV is going to come down, वोलेटिलिटी कम होने वाली है, तो ऑप्शन में पैसा बनेगा बाय में कि नहीं बनेगा? देखते हैं, जिन लोग ने ऑप्शंस खरीदा है थोड़ा सा सोच के समझ के, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इफ वी आर बाइंग एन ऑप्शन विथ एन आईवी एलिवेटेड, डू यू थिंक बाइंग एन ऑप्शन विल मेक सेंस और सेलिंग एन ऑप्शन विल मेक सेंस? सेलिंग विल मेक सेंस, बिकॉज प्राइस बढ़ चुका है, अभी जाके बाय करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, यू हैव टू सेल ओनली। लेकिन इसके साथ हेज भी करना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग इज यू नीड टू लर्न टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट यू हैव टू सेल डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ऐसा नहीं कि 200-300 पॉइंट वाला ऑप्शन बेच दिया, बाद में सडनली कोई न्यूज आ गया, गैप अप हो गया, लॉस बहुत ज्यादा होता है। सो यू हैव टू एंश्योर यू आर सेलिंग डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग ओवर हियर is that the option prices have been rising all the way on the upside, despite of Nifty falling, which is very, very, tricky part. So Nifty call option has continued to rise throughout the day, despite of Nifty down by more than 300 points. Despite Nifty down by 300 points, IV spiking up
You cannot ignore this chart if you are a trader. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हो, भले ही आप ऑप्शन में करते हो कि आप स्पॉट पे करते हो कि कहीं पे भी करते हो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल. नाउ the reason this is happening is also because of the increase in the margin requirement, increase in the VAR, rise in the IV is happening because market is getting inefficient. Inefficient का मतलब है कि arbitrage नहीं हो पा रहा है because of the increase in the margin requirement is also one of the case, and that is the problem with options right now. But if you can exploit this opportunity, it can be a classic opportunity for traders of option, positional traders I am talking about, not intraday. इंट्राडे में तो बाय करके पैसा बनाने के लिए पुट मैं बाय करूंगा ना, मैं कॉल क्यों बाय करूंगा? अगर आपका व्यू बेरिश है, कभी आप लाइफ में सोचोगे मैं कॉल बाय करके पैसा कमाऊंगा? आई एम आस्किंग यू, से यस और नो एटलीस्ट, मुझे पता तो चले. इफ यू आर बेरिश ऑन द मार्केट, विल यू एवर थिंक अबाउट सेलिंग, सॉरी बाइंग, बाइंग अ कॉल ऑप्शन एंड मेकिंग मनी? कोई बोले आप पागल है क्या, मार्केट नीचे गिर रहा है तो कॉल बाय करके बोल रहे पैसा बन रहा है? बन रहा है, लेकिन देखो ना चार्ट पे, देखो चार्ट नेवर लाइज, चार्ट इज ऑलवेज फैक्चुअल, चार्ट नेवर लाइज. बन रहा है यार, विश्वास नहीं होता है. ये चीजें देखना बहुत जरूरी है. दिस इज नोन एज इनएफिशिएंसी. व्हाई आई एम टॉकिंग एंड एम्फसाइजिंग सो मच ऑन इनएफिशिएंसी? if you know an inefficiency, you can have a trade. If you know a pattern, you can have a trade. That is what inefficiency helps. अगर मुझे पता है ये रॉन्ग है, ये प्राइसिंग रॉन्ग है, ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये आईवी का गिव है, आई कैन सिंपली गो एंड सेल एन ऑप्शन. इसको हेज करेंगे. मैं अगर 26,000 बेच रहा हूं तो मैं 26,300 से हेज कर लूंगा. वो भी बढ़ा हुआ होगा लेकिन स्प्रेड मिलेगा. बट यूजुअली ट्राई टू सेल लिटिल आउट ऑफ, मोर डीपर आउट, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब आते हैं आजकल, कुछ तो बोल के जाते हैं. सो यू हैव टू बी लिटिल मोर डीपर आउट ऑफ द मनी इन ऑर्डर टू मेक मनी. दैट्स ऑप्शन. Shall we go on to something known as volume profile? Who is increasing IV of an option? ये क्वेश्चन तो मेरे भी दिमाग में आ रहा है यार, ये ऑप्शन बढ़ क्यों रहा है, आईवी बढ़ा बढ़ा कौन रहा है? ये जो लोगों ने बेच रखा है वो स्क्वायर ऑफ कर रहे पोजीशन. पहली चीज वो है. मार्केट की डेप्थ कम हो चुकी है, तो जो आर्बिट्रेज करते थे, फंड जो आर्बिट्रेज करते थे, वो नहीं कर पा रहे. जो लोग प्लेयर्स बंट आउट हो गए आफ्टर व्हाट हैपेंड टू लास्ट ट्यूसडे, पोस्ट द अनाउंसमेंट, दे वेंट आउट, द वॉल्यूम्स ड्राई डाउन and the volumes reduced, and a little buying comes and the option spiking up. So it's a mix of everything, and the margin requirement has increased. So mix of everything is making it more inefficient. It is making it more inefficient. So that's how it is happening. Or the market is expecting a big gap, maybe downside or upside. Big gap से अगर नीचे भी गिरा, आईवी बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा तो ऑप्शन प्राइस बढ़ेगा. सो कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर शार्प गैप डाउन हुआ तो वैसा. लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोफाइलिंग ऑफ द मार्केट. राइट नाउ वी आर लुकिंग एट दिस थिंग. समझ में आया ना आप लोगों को, एवरी वन ऑफ यू? लेट अस लुक एट नाउ प्रोफाइलिंग. व्हाट इज प्रोफाइलिंग? प्रोफाइलिंग इज अ वेरी क्लासिक वे ऑफ लुकिंग एट वॉल्यूम प्रोफाइल. व्हाट्स हैपनिंग विथ वॉल्यूम्स? कहां पर बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना रहे? लेट अस जस्ट लुक एट इट. सो आई एम गोइंग टू गो ऑन द निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट, and I'm going to look at the volume profile. Now I'm going to see what's happening around. Where is the big volume happened? This is volume profile. This is big players behind the scenes activity. ये बहुत जबरदस्त चार्ट होता है दोस्तों. This is big players activity. वॉल्यूम प्रोफाइल से हम कहते हैं. बिग प्लेयर्स एक्टिविटी है. यहां पर मेजर वॉल्यूम हुआ है, मेजर वॉल्यूम at 25,960 levels. ये चेंज होता रहेगा with more data, it will keep changing a bit. So around 25,900 के आसपास फ्यूचर है. स्पॉट लेवल अराउंड 880 के आसपास होगा. अगर ये 960 है तो 880 के आसपास. So 25,880 is where the major hurdle is lying right now. Now where is the support? कहां पर बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बनाई थी वो देखते हैं. In this move we can see some minor support kicking in,
एट दीज लेवल्स। देखते देखते थोड़ा और डेटा लेते। दिस विल कीप चेंजिंग विथ मोर एंड मोर डेटा। वी नीड टू सी हाउ मच ऑफ डेटा वी नीड टू पिक अप, हाउ मच ऑफ डेटा वी नीड टू पिक अप। इफ आई एम लुकिंग एट दिस मच ऑफ डेटा, मतलब मैं ये अगर ये पूरे राइज का, ये राइज मैं देख रहा हूं, ठीक है, और तो यहां पर मुझे लेवल मिल रहा है, मतलब अराउंड ये फ्यूचर है यहाँ 25,400 से 300 के बीच में एक जोन है। 25,400 से 300 के बीच में एक जोन है। सो इफ आई एम लुकिंग एट दिस, आई एम अगेन गोइंग टू टेक दैट जोन। हाँ, सो आई एम लुकिंग एट दिस डेटा। सो प्राइजेस का जो सपोर्ट आ रहा है, a very crucial support is coming at 25,268. This is 25,268, not 24. 25,268 and minus at 25,400, which translate into 25,360 spot. So I'm just trying to figure out कि ये फॉल कहां पर अरेस्ट हो सकता है। सो 25,360 स्पॉट है जहां पर सपोर्ट है। मेजर हर्डल है मेरा 25,880। अब ये मुझे मिल गया मेरा रेंज। I think, and from a wave perspective, what has happened is possibly from a wave perspective, if we are looking at the entire wave pattern of what has happened, how the price have behaved, this entire fall completed an X wave at the bottom. And we completed wave A here. We are right now in the formation of wave A, B, C in the form of B, which is going on. But ये fall sharp है. I'm not going to buy it. I'm not going to buy unless I see a two-stage reversal confirmation. Unless I see a close above prior day high, I might not buy it. But I know this is in the form of wave B. Wave B can go to the extent of 61.8% retracement of this rise. Can someone tell me ये पूरे rise का 61.8% retracement कितना होता है? Anyone? यहां से देखें हम, we'll go on this cyclic line. I was just checking where is the retracement gone. यहाँ पर secret geometry. We'll have the Fibo retracement. Fibo retracement ये रहा, and ये पूरे rise का मुझे देखना है भाई 61.8 कहां पर आ रहा है। Approximately this is coming again around the 61.8 is here. अराउंड 300, मतलब 260 के आसपास, 220 के आसपास स्पॉट प्राइस है। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। ओके, लवली। सो कैन आई से दैट जो हमारा सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, सपोर्ट जोन जो आ रहा है, दैट इज एनीवेयर बिटवीन 25,250 टू 25,360 लेवल। दैट्स माय सपोर्ट एरिया। सो कैन आई नाउ बेसिस ऑफ दिस सपोर्ट एरिया, ये मेरा सपोर्ट जोन है जहां पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी है, जहां मेरा 61.8% भी है, एंड यहां पर मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि इस लेवल के आसपास मैं सिंपली ट्रेड ले सकता हूं। कैन आई डू दैट? आर यू विथ मी, एवरी वन ऑफ यू? सो निफ्टी volume profile is showing big players activity at 25,880 levels. On downside 25,360 to 25,250 is now major support, which is also 61.8% retracement of the entire rise. ओके, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? नाउ व्हाट इज एन ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी? यहां तक हमने देखा फैंटास्टिक राहुल कुमार कन्नन। ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी क्या है? डायरेक्टर साहब नोट करना, हमारे जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब है वो लोग भी चैट कर रहे हैं क्या, जो ज्वाइन किए हुए चैनल को? तो मुझे आप बताते जाइए उनका नाम शाउट आउट के लिए, सो दैट आई एम अवेयर। एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ पॉसिबिलिटी
लेट्स गो ऑन ट्रेडिंग व्यू, लेट्स गो ऑन ट्रेडिंग व्यू। यहां तक तो हमने देखा, यहां तक समझ में आया। ट्रायंगल बनने का पॉसिबल सिनेरियो है। ये जो अप मूव था बहुत शार्प था, तो चांसेस कम होता है यूजुअली, लेकिन वो इवेंट ड्रिवन भी था, तो इसलिए मैं वो कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर रहा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माई स्क्रीन हियर। यहां पर यहां पर अगर आप देखेंगे, ओवरऑल दिस फॉल, okay, could have been A of a triangle. This rise could be B of a triangle because of the event जो चीजें 6 महीने में होनी थी, 3 महीने में होनी थी, 2 महीने में होनी थी, happened in one day. Because of the event, what is supposed to happen will happen. So what happens is during such eventful times, जो होना था वो तो हो रहा है, लेकिन जिसको 2-3 महीना लगना था वो एक दिन में हो गया. So the event comprises the time. Event results into compression of a time. That's what happened. So my alternate scenario still remains is this alternate scenario. I'm not confusing you. I'm just keeping the alternate scenario with the outlook still same, which is wave A was here, B was here. This is wave C going on the downside of a triangle possibly. We will have D, we'll have E, and then ये कौन सी डेट आएगी मालूम है? कौन गेस कर सकते हैं कौन सी डेट होगी? Anyone can guess what can be the possible date? फैंटास्टिक, 4 मार्च। कबीर, अंकित, सुपर, अभिषेक। 4 मार्च, फिफ्थ था, लेकिन वो फिफ्थ से फोर्थ हो गया क्योंकि बजट डे पे संडे को मार्केट चालू था। सो दिस फिट्स एक्सट्रीमली वेल विथ आवर साइकिल एनालिसिस। दिस इज वेयर द पावर ऑफ टाइम एंड पावर ऑफ नियो वेव फिट्स इन टुगेदर। तो मतलब ओवरऑल जो फोरकास्ट मेरे हिसाब से लग रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी लाइकलीहुड ऑफ फोरकास्ट वेयर वी विल स्पेंड सम टाइम इन कंसोलिडेटिंग, ऊपर नीचे टाइम पास करेंगे। प्लेयर्स विल बी थिंकिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, बट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन एंड वी आर गोइंग टू मूव इन गैप्स। एंड वंस दैट डेट नियर्स, 20th Feb से शुरू हो रहा है, लेकिन 20th Feb जस्ट स्टार्टिंग डेट है, एक्चुअल साइकिल 4 मार्च को है। तो मतलब ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी है। इफ इट्स गोइंग डाउन, डाउन साइड अपॉर्चुनिटी, रिवर्सल कैच करो, अपसाइड अपॉर्चुनिटी एंड साइड। लेकिन ट्राइंगल ट्रेड करना हमेशा ट्रिकी होता है। सो फॉर ट्रेडिंग अ ट्राइंगल, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आर फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। ऑप्शन ट्रेडर्स का मतलब क्या हो? अगर जो ऑप्शन सेलर है, what they can do is instead of being inside the mess of this triangle, I can simply sell an option strike here, and I can simply sell an option strike here, and I enjoy the entire move if sitting from outside, not getting into the mess inside the triangle. Getting inside the triangle is going to be very challenging क्योंकि you need to time it well. You need to be accurate with your entry. You need to be very accurate with your exit. One thing missing, you lose. But for an option seller sitting both outside and hedge it, do not carry naked, hedge it. Once you are outside and looking at the structure, you're like, अच्छा है, नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, और अच्छा है, फिर नीचे जा रहा है, very nice. I'm enjoying my ride. By sitting out, by waiting out, by simply generating an ROI. That's what big players are doing, I think, right now. So the mess that is happening inside the is not they are not participating, they are participating outside. This is how सुदीप तो कह रहे सर एंजॉइंग द मार्केट बिकॉज ऑफ यू। आपके पिटारे में से कुछ ना कुछ नया होता है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट आई एम सीइंग ऑन द चार्ट एंड हाउ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या ये चार्ट? So what we are trying to do is we are simply trying to look at the market with a very very simple way of seeing things, with a very very simple way of seeing things, and we are trying to figure out where is the big players activity happening, what is the wave theory suggesting, is it aligning with my time cycles or not. और ये करने के बाद में आपको ट्रेड करना है, आपको व्यू बनाना है, एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रेड इट वेरी वेरी वेल इन अ वेरी सिंपल फैशन। तो ये सारी चीजें हैं। I'm open for questions, guys. If you have questions, if you want to know anything, I'm open for questions. But is it interesting how we have to look at markets? So Nifty looks to be just consolidating right now.
waiting for that time to start, and then it's going to explode. That's how I am seeing the market. That's how I am seeing the market. Will be, is it interesting what we did today? आईटी सेक्टर पे व्यू आईटीआर इट्स नॉट गुड फॉर श्योर। आईटी सेक्टर का चार्ट देखना है क्या आपको? दिखाऊं अगर बहुत सारे जन बोले तो आई डोंट माइंड। एंड पीपल ऑन यूट्यूब, डायरेक्टर साहब मुझे आपने दिया नहीं, यूट्यूब पे कोई है हमारे? बहुत सारे जन है जो समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे, एवरी वन ऑफ यू? आईटी सेक्टर देखना है आपको? ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। आई जस्ट गो एंड ओपन अप माय आईटी सेक्टर चार्ट। कहां पर रुकेगा ये, कि रुकेगा ही नहीं? बहुत बड़ी गड़बड़ है आईटी में, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों मैं बता रहा हूं, लुक एट इट। वीकली ट्रेंड देखते हैं यहां पर। व्हाट इज द वेव पैटर्न सजेस्टिंग? लेट अस लुक एट इट। दिस इज सीएनएक्स आईटी, ठीक है? यहां पर अगर मैं ये चार्ट चेक करूं, दिस इज ए बी एंड सी। दिस इज अ टाइम सपोर्ट एरिया which is a very crucial area. This movement was supposed to be up move, but we have reversed back sharply. This turned out into an X wave, which means this is a logarithmic scale, which means we have started again a move on the downside after completing an X wave. So it's a very dangerous index as of now. We have already tested this support of 31,250 multiple times. If we breach below this, not a good sign. We might see another 10-20% cut until this level. So 26,150 is the ultimate support area. Weekly, this is weekly chart. Weekly is not good. Daily is disaster. Short term pullback possible है, oversold है, इसलिए हम पुल बैक देंगे। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बाय द स्टोरी। आई एम नॉट गोइंग टू बाय सिल्वर। आई एम नॉट गोइंग टू बाय आईटी। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई एम गोइंग टू बाय स्टॉक्स जैसे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यार व्हाई शुड आई एंटर इनटू समथिंग इन एंटिसिपेट अ सडन रिकवरी? जो एआई चैलेंज है, आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम अ लिटिल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। डू यू थिंक दिस एआई चैलेंज विल reverse overnight? The IT sector which is under pressure because of the AI challenge we are seeing, or will it take time? Common sense. मतलब जो भी एआई में हो रहा है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, एटलीस्ट in terms of our IT companies to catch up. They will now, what they will do, our IT companies will going, we are smart people, by the way. They are going to tie up with the companies that are into AI, get the best of the AI from them, integrate with their systems, and create an innovation. That's going to happen for sure. But that's going to take time. That is going to take time. So for IT view, I think we are at a very crucial support. Short-term pullback possibly, we might again show a pullback, but that will be only wave B. So this fall was wave A. We might only have wave B, and then we might again have wave C down. So this is how it's looking like. Are you with me, every one of you? So this is how I'm seeing IT sector as of now. Just a temporary pullback, and we should then move down. टेम्पररी पुलबैक, यहां से बाय करेगा? नहीं नहीं भाई, बाय नहीं करना है। शॉर्ट टर्म पे चार्ट को टाइम करना है, यहां पे बाय नहीं करना है। पहले देखना है पुलबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आया? आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस गाइस। आर यू देयर फॉर टुमारो? कल के लिए कौन कौन है यहाँ पर? मास्टर क्लास करे क्या कल निफ्टी के ऊपर? थोड़ा सा टाइम साइकिल्स को देखे कि कैसे ट्रेड करना है। ये विल कंबाइन दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस मास्टर क्लास। आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट्स हैपनिंग विथ वॉल्यूम्स। मच डिटेल में जाए क्या वॉल्यूम्स के ऊपर? आप लोग हो अवेलेबल? लिंक शेयर करेंगे क्या प्लीज विथ एवरीवन? सो निफ्टी इज सेट टू एक्सप्लोर। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड व्हेन एंड हाउ टू लुक एट टाइम साइकिल ऑन एन ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट पे टाइम साइकिल अप्लाई होता है। हमारा काल चक्र लास्ट वीकेंड था यार, मजा आ गया था। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। वी आर गोइंग टू डू दैट। सो वी विल बी लुकिंग एट ये सारी चीजें हम करेंगे, बट यू हैव टू बी देयर। कौन कौन है कल पार्ट ऑफ दिस मास्टर क्लास एट 11 AM? जूम फुल हो जाता है हमारा, अब ज्वाइन नहीं कर पाओगे। एक्सक्लूसिवली ऑन जूम है। इट्स एन आई ओपनिंग मास्टर क्लास। इट्स गोइंग टू चेंज द वे यू एवर सी द मार्केट। सो कौन कौन है यहाँ पर? एक कंफर्मेशन मुझे डालते जाइए। गोइंग टू बी रॉकिंग वेबिनार टुमारो। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लूनार साइकिल।
वॉल्यूम प्रोफाइल, टाइम साइकिल, ऑप्शन चार्ट पे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन यू हैव टू बी देयर, लाइव होना चाहिए, तब आपको मिलेगा ये। बाद में बोलना नहीं मिस हो गया। आई एम गोइंग टू शो यू ऑन एन ऑप्शन चार्ट, ये सारी चीजें मैं करने वाला हूं। एक और पोल ले रहा हूं, आर यू अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र बाय एनी चांस? हमारा जो ब्रह्मास्त्र सेशंस अभी शुरू होने वाला है, वी विल हैव अ प्री सेशन which is starting in February, and then Brahmastra Day 1 is going to happen in first week of March. If you are there, I'm taking a very quick poll, and if you want, you can be a part of it. Jasprit Kare sir didn't miss a single class. Thank you very much. How to use three candlestick rule कल करें? अनीता आप हो ना, आप तो सभी मास्टर क्लास पे आते हो, मिस नहीं करते हो, so can we do that tomorrow? कल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, यहाँ जाना है, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन दिस ब्रह्मास्त्र सेशन, यू विल बी लविंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। डायरेक्टर साहब, यहाँ पे ऑप्शंस मंत्र का डेट आएगा, या अपडेट नहीं किया हुआ है, प्लीज इंश्योर ये पेज आप अपडेट करिए, हमारे त्रिशूल के डेट्स डालना होगा नीचे। लिंक आपके साथ शेयर किए। आई एम ऑल्सो टेकिंग अ वेरी क्विक पोल इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, एंड नरसिम्लू आपका प्लीज नंबर ड्रॉप कर दीजिए, माय कलीग विल हेल्प यू आउट। एनी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू कैन यूज दिस, विल बी डूइंग दैट। विवेक कपूर इंटरेस्टेड है, यू कैन ऑल्सो पे 10K टोकन एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ब्रह्मास्त्र, वेयर वी विल डू अबाउट ऑप्शंस। ओके, मनीष बिल्कुल आइए, आप कल जुड़ रहे हो तो हमारे साथ में। यहाँ पर 10K का टोकन लिंक है, आप टोकन पे करके भी रजिस्टर कर सकते हो फॉर आवर सीट, ब्लॉक कर सकते हो फॉर आवर ब्रह्मास्त्र। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, एंड डायरेक्टर साहब नरसिम्हलू का प्लीज नंबर नोट करिए, वो चेक कर लीजिए, वो आपको बात कर लेंगे। एंड सुदीप तो आप भी आ रहे हैं कल? ओके हरप्रीत आप हो कल के दिन? अमावास पे क्या करना है, लूनार साइकिल की बात करेंगे हम, डेफिनेटली वी विल डू दैट। एब्सोल्युटली लवली लवली। सो बहुत सारी चीजें करेंगे, वी विल बी लुकिंग एट इट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, एंड यहाँ पर चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, कल के दिन मिलेंगे, वी आर गोइंग टू डू दैट, एंड द लिंक इज शेयर्ड अक्रॉस विद एवरी वन ऑफ यू, यू आर गोइंग टू लव व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे कल के दिन में, एंड इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक, नीतल निखिल सभी को। एंड हमारे ऐप पे एक फ्री कोर्स भी है, डायरेक्टर साहब उसे जरा लाइव करना, बहुत टाइम से हमने दिया नहीं, ऐप पे फ्री कोर्स लोगों को देते थोड़ा सा, वो भी है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में लिंक्स, आप फॉलो करते रहिए, ज्वाइन करिए चैनल को, लाइक करिए, एक ही मोटो है, आपको सिखाना है और आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पर कल के वेबिनार में आप लोग जुड़िए, इट्स गोइंग टू बी लवली। बैंक निफ्टी 54 डे साइकिल आज नहीं था, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है हमारा, आई एम गोइंग टू शेयर इट अक्रॉस टुमारो। सम इंफॉर्मेशन, आप नंबर शेयर करिए डायरेक्टर साहब सभी के साथ में, सो दैट दे कैन डू दैट। डोंट यहाँ पर नंबर शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों के साथ में। Okay, awesome. So lovely, and it has been fantastic to have you all here. Thank you everyone for joining in. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.